तो कि ये इंसान कैसा है और उसके बाद आप जजमेंट पास कर देंगे। अब उन्हीं लोगों को हम एक लॉकअप में डालेंगे और आपको उतना टाइम मिलेगा उनको जानने का और डिसाइड करने का। And some very favorite people who have been dying to put into jail are in this show today. So I am so excited, you have no idea. In any human relationship, the most detrimental thing is judgment. And that's the easiest thing to pass. And today you will have the chance to go beyond the judgment and know the person. चैलेंजिंग सबसे पहले जिस तरह का जेल बना है, जिस तरह के टास्क होने वाले वो काफ़ी चैलेंजिंग होने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स जेल चैलेंजिंग होने वाला है। जेल से बचे तो फिर जेलस तो है। और ये जेलस सारे दिमाग से खेलते हैं, हमको बताया गया। अब इधर से पूछता हूँ फारा, क्योंकि मेरे सवाल में मेरा आंसर है कि हाउ वर्रिड शुड द इमेज बी ऑफ यू? As worried as Shirish is of me. तो ये तो तय होगा कि शिरीष इनमें ही है। They should be worried. और ऊपर से एकता है, मोनिका है, उन्होंने हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि we have to be very very strict, क्योंकि हम थोड़ा ना ऐसे कभी दिल हमारा ऐसे मोह का हो जाता है, but we are going to be extremely यार ये कॉस्ट्यूम पहनते ही ऐसे लगता है कि अभी एक हंटर लाओ और कुछ करो। तो मुझे तो सारा हंटर लेके जाना चाहिए। लीव पहले देखो ना पड़ेगी। लीव दी हंट। Wow, I'm happy Gujarati. You took my name. बाहर मिलना ऐसे। अच्छा, मैं बाहर आ सकता हूँ? आप लोग डिसाइड कीजिए। जनता की No. I love you guys. Thank you. देखो, अरे वो बोल रहे नहीं। एक के लिए सुनाई नहीं दे रहा मुझे। No. मेरी कैसा लगा रहा है, कैसी जा रही दोनों की केमिस्ट्री। अरे यार रितेश मेरा उससे बहुत 100 टाइम्स ज्यादा वो इविल और कटिंग सेंस ऑफ ह्यूमर ही है, so we are going to enjoy ourselves. Absolutely, I think फारा आप सभी जानते हैं फारा का सेंस ऑफ ह्यूमर और कितनी वो नेक दिल है और कितनी दिल की अच्छी है, सच्ची है और ज़बान की कितनी कड़वी है, ये हम सब जानते हैं। पर I think I'm very excited to do this show or host the show along with Farah because we've known each other for the last 20 years और मुझे लगता है कि we will have a great time doing this. Yeah, I think that when they said that I had to do with Ritesh, it was a no-brainer. Like, and was it the same for you? Yes, along with the money. Really? I did it for Ritesh. I love you, Farah. I hate that. बिल्कुल पैसे की बात मत करो। We cannot afford anybody after everybody who's already there. We'll see. एकता will decide. But ये है कि रोज दिलीप का खाना जरूर आएगा सेट पे। That is coming. तो किस सजा में आप उसे लॉक करना चाहोगे? भाई वो नहीं आ सकता मेरे घर पे, खाना कौन बनाएगा और मेरा YouTube चैनल बंद हो जाएगा। हाँ, उसकी सजा मैं उसको घर पे देती हूँ। दोनों कमर्शियल हैं एंड दोनों ब्लॉकबस्टर दे चुके हैं और एक ने तो मेरे को 2 बड़ी हिट दी हैं, एक विलेन और कैपुन। एंड I thought we cannot be doing a show on Netflix without having 2 extremely crackling jailers because एक तो level of contestants है जो किसी की नहीं सुनी। अब उनको सुनाने के लिए ऐसे जेलर लाने पड़ेंगे जिन्होंने जो दिग्गज भी हो, जो ऐसा लगता है कि ये भी जेल में हो सकते हैं और इससे अच्छा कौन है, इसकी बोल सकते हैं। Okay. Thanks, Ekta. I have to say this about Monica. While she looks such a sweet little girl and everything, she has the sharpest mind in the business. And it's almost invigorating for a creator to work with an app. I mean, I've worked so much in the industry.
who says, think big, think, don't think safe, think out of the box, and we'll be with you. So that I felt gave us the wings to create a rooted Indian show with an absolutely international look. इस बार इंडिया का रियलिटी शो अब्रॉड जाएगा. Made in India. So that for me was wow. Finally, a captive reality show made in India is now on an internationally acclaimed app called Netflix. That was it. See, I think right now we both have. Ritesh, of course, has been an actor, but now he's directed two blockbuster movies. I've been a director for many years, and with the mic command. So I think that comes very easily to me to control, to you know how to keep that in check. I think अब ये डायरेक्टर बन गया है तो इसका भी वो अंदर का वो आएगा, अंदर का जेलर. Because when you are on set, you are literally a jailer because you are controlling everything there, and you are putting people in their places, whether they are stars or technicians. तो वो वाला साइड मेरा बहुत जल्दी निकलता है बाहर. I think also there are various personalities, achievers who are on this show. So as jailers, we need to be fluid. You cannot come prepared that I'm going to be strict today. It just depends on the situation, what has happened. You have to, but as she said, we have to be the ringmasters. We have to be in control of the show and the narrative. So that's what we know what we're going to do. But I think the best part is to react naturally to what they are doing on the show. Rather कि पहले से हम माइक बना के जाए कि हम ऐसा ही बोलेंगे और ऐसा ही करेंगे. For me, the best kind of reality shows are the ones that feel organic and real, not scripted. So we are hoping that our natural instincts give you the content. Yeah. And I think you are saying कि 3 धुरंधर को लेकर शो बना रहे हैं. वो जो 14 जो आने वाले हैं लॉकअप में, आप सोच भी नहीं सकते वो कितना हुड़दंग मचाएंगे. So I think it is going to be a very potent mix. और Netflix के लिए, you know, this is a flavor that we've been wanting to bring. क्योंकि Netflix के बारे में एक चीज, I think all of you know this, we say it often, हर एक का Netflix उनका अपना personal Netflix होता है. You know, if I want to watch something जैसे कोरा शो है, that speaks to me, or Delhi Crime, or a Taskari, or you want to see a big epic like Heera Mandani, or you want to see a follow reality, juicy like Desi Bling, वो भी आपको मिलेगा, or you want to see Amar Singh Chamkila. तो everybody's Netflix is their own version of Netflix. Entertainment बहुत broad हो गया है अभी, and technology has allowed us कि ऐसा नहीं है कि जो हम दिखा रहे हैं वही आपको देखना है. You can actually pull your entertainment towards you. So Netflix allows that. Everybody's Netflix is their own version, their own delight, and I think Locked Up will find the most unique place in so many people's Netflix accounts. क्योंकि Saturday to Wednesday जब आप देखेंगे what is happening, the way the show is being mounted, a local format, all the celebrities who've been thrown in, and the hijinks of every day. So I think that is what we want to tap in. We have everything from one end of the spectrum to the other, commercial to prestige to award winning. तो आप सब कुछ enjoy कर सकते हैं. That's what we want to do. We are here to serve all of you, your tastes, the audience taste.